chain. Sakshi, food chain. Yes, Sakshi. Ma'am, can I? Grass. Ma'am, grass is eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by snakes. Snake is eaten by eagle. Wow, very good. Now, तुम बोलो हाँ, बोलो one food chain. मैम हम हाँ बोलो ना. मैम fungi is eaten by squirrel. Squirrel is eaten by hawk. हाँ, one food chain. और एक सेकेंड. दिव्या. हाँ. Ma'am, can I? हाँ. Name one food chain. Say now. Say. हाँ ठीक है. पहले Rabbit is eaten by snake and snake is eaten by hawk. हाँ तो एक एक करके बोलो. हाँ तो ये और फूड में Ma'am, can I? Can I आराध्या? मैम can I आराध्या? अच्छा मैम can I आराध्या? एक सेकंड पहले अनुष्का को बोलने दो फिर आराध्या. Okay, the interconnection of different food chains in nature is called food web. हाँ अब ब्लैक बोर्ड दिख रहा है. पहले ये बताओ तुम लोग. Yes, ma'am. No मैम. Yes, No, ma'am. पूरा नहीं दिख रहा. अच्छा से नहीं दिख रहा है. अच्छा एक सेकंड रुको. मैम ब्लैक दिख रहा है. नहीं, Ma'am, black दिख black रहा नहीं दिख रहा है. दिखा. इसीलिए आपका नहीं आ रहा. क्या नहीं है. वीडियो ऑफ है मैम, आप ऑन करिए. वीडियो ऑफ है. एक सेकंड रुको. ये देखो तो हम तो एकदम ऑन है. दिखे नहीं. मैम ऑन है. मैम नहीं दिख रहा है. मैम दिख रहा है. मैम नहीं दिख रहा है. मैम अब नहीं दिखे. मैम आप दिख रही ब्लैक बोर्ड दिख रहा है. ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा. मेरे में. अच्छा तो ऐसे करके पढ़ाना होगा. लाइट जिधर से आ रहा है. अब ये ब्लैक बोर्ड भी दिखा. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ यस मैम. हाँ वो लाइट नहीं आ रहा था ना मेरे ऊपर. लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था. अब देखो लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था. देख लो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट. देयर शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर लुकिंग इन बेटर वे. क्या मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं अब देखो एकदम नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था. Yes, ma'am. नहीं दिख रहा. मैम दिख रहा है. पूरा स्क्रीन मैम आप नहीं दिख रही है. मैम दिख रहा. मैम वो लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम है. किसी को हम दिख नहीं रहे हैं. बोलो किसी का भी तो नेट अच्छा होगा. मैम दिख रही यस मैम. यस मैम मेरा मैम क्लियर दिख रही है. हाँ देखो कुछ को दिख रहा है एकदम वेरी क्लियर है ना. क्लियर मैम दिख रहा है. क्लियर है. Yes, मैम क्लियर है. क्लियर नहीं है. ब्लर आ रहा है. मैम एकदम क्लियर है. मैम maybe उन लोगों का network issue है. अच्छा हैंड रेज करो. कितने लोग को हम दिख रहे हैं. हाँ ऑनेस्टली हैंड को रेज करो. कितने लोग को हम दिख रहे हैं ये बताओ. जो कोर्स है आपका. अच्छा देखो इतने सारे को हम दिख रहे हैं मतलब हम विजिबल हैं है ना. यस मैम बाजी कर रहा है. हाँ नहीं तो आप अपने इंटरनेट को ठीक करें. ये हम विजिबल हैं है ना. जब कितने लोगों को हम दिख रहे हैं मतलब हम विजिबल हैं. कंप्लीट विजिबल हैं. Whatever animal and plants living in the forest we have divided into two categories. Whatever component present in the
divided into two categories, biotic component and abiotic component. Biotic component comprise of animal and plants which are living in forest. And abiotic component comprise of soil, wood, non-living wood, light, water. These makes abiotic component of the forest that support the biotic component. Soil support the biotic component as the plant grow up in soil. So soil is the biotic component. Light, as the light reaches as the plant level, reaches at the leaves of plant make its food by the process of photosynthesis. So light also support the living component of the forest. Same way, if the water is present, then the plant can take the water, and whatever animal living in the forest can take water. Plant take water for the photosynthesis, and it produce fruit, and that fruit available either directly or indirectly to each and every living organism living in the forest. In this way, biotic component and abiotic component support to each other. Forest give out a large amount of oxygen. Apurva, pay attention. Apurva, pay attention. Otherwise, you will say after 5 minutes, I have not understanding anything. I have not understand, ma'am. Please repeat. So please, I'm saying please concentrate whatever I'm teaching. Plant release oxygen, and this oxygen goes to the atmosphere, and from atmosphere plant take carbon dioxide for the photosynthesis. In this way, abiotic component and biotic component are interdependent upon each other. Abiotic component, soil, light, water, air support the living component of the forest. Now, food chain form in the forest. One animal eaten by other animal. Other animals eaten by next animal. In this way, food chain is formed. And all of you have seen how the one food chain interconnected with the other food chain and makes the food web. And biotic components of the organism divided into producer, consumer, primary consumer, secondary consumer, and decomposer. As we have divided our environment. Our environment divided into biotic and abiotic component. Same way, forest divided in biotic and abiotic component. And now, same way, biotic component divided into 3 layers. Producer that produce food, that is the plant. And herbivorous and carnivorous. Herbivorous are those organisms which feed on the plants only. Like the deer, rabbit, cow, buffalo, whatever grass eating and plant eating animals, camel, live in the
forest. And carnivorous are those animals which eat Ma'am, the that depends on flesh flesh. of other animals, like a lion, tiger, that is living in the forest. So these are carnivorous. And some omnivorous, like the human beings, also present That in the depended forest. on both. They are depend upon the plant as well as place of the other animal. These are omnivorous. Can you see, can you tell the name of two omnivorous? Human Yes, ma'am. Human beings and beer. Ma'am, crow. Ma'am, human beings. Ma'am, and crow and Deer rat. and human being. Crow and dog. और बोलो? Rat. Ma'am, jackal. Rat. Human being. jackal? Ma'am, rat. और? You will collect the name of. Ma'am, shrew. Stew. Stew also eat both plant as well as flesh of other animals. A small Ma'am, insect. monkey. It's very small, na? So it ate the plants as well as insect. Ma'am, monkey. This way, omnivorous eat the both plants as well as animal product. Beer. Next, decomposer. Same way, decomposers are also present in the forest that decompose the dead of plants and animal, dead body of plants and animal. Just like eagle. Just like eagle and jackal. Just like the eagle and jackal. The eagle and jackal and the bacteria and fungi. Some bacteria and fungi also decompose the dead body of plants and animals. Bacteria, fungi, and some worms decompose the dead body of plants and animals. In this way, they clean the forest. In this way, they return the nutrients to the soil. Whatever nutrients taken by the plant for the photosynthesis, after decomposition, decomposer return the nutrients to the soil. Now, do you know mangrove are the short dense tree that tolerate and adapt themselves well to both saline and fresh water and grow in the coastal areas and Gangetic Sundarban in the West Bengal in the largest mangrove area in the India. All of you have studied. I was looking at the Friday. Aparna Basak ma'am was teaching where is the Sundarban Delta and what type of vegetation are present there. Yes. Ma'am, I West was there Bengal. in the ma'am. classroom, same classroom. When she was teaching. So all of you are knowing the about the delta and the greatest delta present in the just at the Ganga river that Sundarban mix Delta. up. See which delta? Aradhya, which delta it is? Ma'am, Sundarban Delta. Sundarban Delta. And Sundarban ma'am. Delta having many mangrove tree that grow in very well in the slurry form of the soil. Slurry form means kya bolo? Ma'am, paste के form. Mix with the soil. Ma'am, in the form of paste or liquid. in the paste of solid and liquid, जिसको दलदल बोलते हैं, है ना? You know how the mangrove respire by the adventitious root, aerial root that you have studied in the 4 and 5 class. The aerial root arises by the mangrove for taking the Oxygen.
मैम fresh उसको oxygen. अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता इसलिए वो बाहर आता है अच्छे से ऑक्सीजन Yes, लेने के ma'am. लिए। हाँ बिल्कुल सही. मैम यही सेम Yes, चीज ma'am. banyan tree में भी होता है. हाँ रूट तो उसमें डीप रहता है ना दलदल में. Yes. और बाहर सॉइल से के जो root निकल जाता एयर है। स्पेस होता है वो कौन लेयर रहता है? वाटर. तो इसलिए सो देयर इज नो एयर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द मैनग्रोव रूट. दैट्स व्हाई मैनग्रोव रूट arise a aerial root, and this root able to absorb the oxygen from the atmosphere. In this way, mangrove trees adapted to the Sundarban Delta. है ना? It is the adaptation. Now, the different layer of forest for making our study easier, for knowing the arrangement of forest in better way. Forest has been divided into different layer. What are these layer? The layer of the forest. First forest layer is the forest floor layer. Next, understory layer, canopy, emergent layer, and the crown of the tree. These are the forest layer. Once again, forest floor layer, understory layer, canopy layer, emergent layer, and the crown of the trees. These are the layer present in the forest. A forest made up of different layer, starting from the ground and moving up to the ground. First layer is the forest layer. This layer made up of decomposing leaves, animal dropping, dead trees, and animal. All of these decay on the forest floor and form new soil and provide nutrients to the plant. The forest floor support the fern, grasses, mushroom, and tree seedling. Whatever leaf that fall from the trees and the very small herbs, all are present in the forest floor layer, and these are decomposed by the bacteria and fungi. After decomposition, whatever nutrients present in the leaves and the small plants get mixed up with the soil. In this way, soil get its nutrients again for supplying nutrients to the growing plant. Here, Yes, ma'am. Yes, ma'am. what is a tree seedling? Tree seedling, And a small plant. very good. The small plant that is just come out from the seed. Very small plant. It also present in the forest floor layer. Now, the second layer is the understory layer. The understory layer made up of bushes, shrub, growing tree that are adapted to living in the shade of canopy. Understory layer is the second layer of the forest, and that is made up of bushes, shrubs, and young trees. Trees that is young. Young means that is in growing in size. Yes, ma'am. That are adapted to living in the shade of canopy. What And is the shrub? growing tree. Growing trees. Shrub. Who will tell about the shrub? Bushes and grasses. Bushes. That having the size approx kitna? How much feet? 5 feet. And having the bushy Ma'am, appearance. Many 5 to branches. 10 feet.
5 to 10 feet. 10 Ma'am, feet. 10 feet. 10 feet. Ma'am, a small plant having woody No, no. stems are known as Hey, shrubs. and listen, all of you have been studying class 6. It is not 10 feet, 5 to, I think 5, 6 feet. Just wait. Just wait. Ma'am, it is about 5 to 6 or 5, 7 6 feet. feet. 5, 6 feet. Not more than that. And having the many branches that makes like Ma'am, bushy appearance. Ma'am, That is the bush. ma'am, Like the plant of Mehdi, Bougainvillea, or Ma'am, rose. rose, or name more Ma'am, brinjal. plants. ma'am, hibiscus. Ma'am, jari booty. Hibiscus, Jasmine. right? Jasmine. These are the bush. These are bushy in nature and that are adapted to live in the shade of the plants. देखो bushes sub having medium size 3 feet to 7 feet. Shrubs or bushes having listen 3 feet to 7 feet. That are adapted to live under the shade of the plant. This makes the canopy. Understory layer. Now the canopy is the most important part of the forest for all of us and the plants living in the animals living in the forest. Canopy is formed by the masses of intertwining branches, twig, leaves of the tall tree and the mature tree. What is the meaning of intertwig? Intertwig का meaning क्या है? आपस में मिलना. इंटरट्विग ट्विग जो है ये इस फॉर्म में मिला हुआ है. connected. आपस में ब्रांचेज मिला हुआ. इतना ब्रांच निकला हुआ और इतना निकला हुआ और उसके पास इतना जगह नहीं है कि वो इंडिविजुअली ग्रो करे. तो इतना डेंस वो इलाका है, वो एरिया है फॉरेस्ट का कि ये जो ब्रांचेस जो है वो निकला है और एक दूसरे में मिक्सअप हो गया. मतलब निकल के ऐसे मिक्स हो गया. इंटरट्विग है ना. ट्विग मतलब ब्रांच ऑफ अ ट्री. टहनी जिसको कहते हैं अपने बिहारी भाषा में, जिसको ट्विग कहते हैं टहनी, है ना. तो इंटरट्विग मास ऑफ इंटरट्विग ब्रांचेज माने ब्रांच का जो है एक दूसरे से मिला हुआ रूप. The canopy is formed by the masses of intertwined branches. Twig means branch, है ना, टहनी. The leaves of the tall mature tree. This form the canopy layer. The crown of the tree dominant over the canopy. And it is received the most of the sunlight. This is the most productive part of the tree where the maximum food is produced. That's why it have importance. Canopy is the most productive part. Bolo. What is the meaning of dominant? Ma'am, meaning of dominant? डोमिनेंट मतलब उस पे हावी होना. डोमिनेंट मतलब हावी होना, डोमिनेंसी. और रिसेसिव मतलब दब जाना. तो वो जो है कैनोपी लेयर में, कैनोपी में जो ट्री का क्राउन जो लेयर होता है ट्री का, तो वही डोमिनेंस होता है, इसके ऊपर निकला होता है ना. कैनोपी लेयर के बाद जो है ट्री का क्राउन होता है ना. डोमिनेंस मतलब क्राउन आर डोमिनेंट ओवर द कैनोपी. तो क्राउन जो है
डोमिनेंट के ऊपर है ना। यहाँ डोमिनेंसी मतलब ऊपर होना, उसके ऊपर होना। भारी पड़ जो कैरेक्टर नहीं पढ़ते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। एक डोमिनेंट का कोई स्टूडेंट या फिर तुम्हारा क्लासरूम में कोई जो है मॉनिटर जो है बहुत डोमिनेंस होता है, एकदम बिल्कुल दूसरे और सारे बच्चे को सप्रेस करके रखता है ना। क्लासरूम में ऐसा देखे है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर। कभी कभी किसी को मॉनिटर जब बना दिया जाता है तो वो जो है किसी को हंसने भी नहीं देता है। कभी ऐसा होता है ना क्लास में। मैम हाँ, बहुत बार होता है। तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर, हाँ, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी, अगर मॉनिटर नहीं भी हैं और मॉनिटर का काम है क्लास को शांत करवाना टीचर के एब्सेंस पे, लेकिन वो बच्चा भी बाहर आ जाता है, मॉनिटर की आराध्या की बात नहीं मानता है, और वो भी आकर के ब्लैक बोर्ड पर जो बात करता है बच्चा, स्टूडेंट, उन लोगों का नाम लिखना शुरू कर देता है ना। तो ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर? डोमिनेंसी समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो मैम आज का डोमिनेंसी class देखो, बहुत अगर ये प्रभुत्व, हाँ, तो ये जो कैनोपी लेयर जो है क्या है, जस्ट मतलब beneath the crown of the tree, and it is most productive part of the tree because the fruit, whatever fruit bear by the plant remains in this layer, canopy layer. Canopy form a steady protective umbrella over the rest of the forest. ये इतना dense intertwined branches जो है वो क्या करता है, अम्ब्रेला की तरह। अम्ब्रेला मीन्स छाता, नहीं पता? यस मैम। तो intertwined branches of trees makes like a umbrella, rest of the forest over the understory layer and the forest floor layer. Last, it is the emergent layer. On this emergent layer exists tropical rainforest. This layer present in that forest that are present in the tropical rainforest area that receive the maximum amount of rain water, है ना। जिस फॉरेस्ट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन वाटर होता है, टेम्परेचर अप्रॉक्स 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, कितना, एंड इट इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। वेरी गुड, इट इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। दैट फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल रेन मैम बहुत जानते हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में। हाँ बोलो मैम एसएसटी में पढ़े थे। 0 to 10 डिग्री सेटेड होता है। मैम below 10 डिग्री। हाँ मैम 10 डिग्री to 23 डिग्री। मैम 0 to 10 डिग्री। मैम 0 to 10। No one 0 to 10 degree. मैम 10 to 23 वो एक चैप्टर साइंस में भी तो पढ़े, वो मैम वो अडैप्टेशन में ना। तो डिसीडियस फॉरेस्ट हो जाता है। ए लड़के सुनो, तुम लोग नहीं पढ़े हो उसमें एडेप्टेशन चैप्टर पढ़े हो ना? यस मैम। एडेप्टेशन चैप्टर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जस्ट वेट, टेम्परेचर इन सच रीजन have an average value of 20 to 25 degrees Celsius and not vary more than 5 degrees Celsius. It have given in page number 204. Yes ma'am, we have studied. देखो तो, हाँ, they are ये SST and science, they are interconnected to each other. The emergent layer exists in tropical rainforest and it is composed of few scattered tree over canopy. Scattered tree मतलब क्या?
कहीं कहीं छितरा, जैसे ये पूरा ये ब्लैक बोर्ड तो कहीं कहीं, हाँ जैसे यहाँ यहाँ मैम फैला कहीं हुआ। कहीं, हाँ फैला हुआ स्कैटर्ड, हाँ फैला हुआ, वेरी गुड, फैला हुआ, स्कैटर्ड मतलब छितरा हुआ, फैला हुआ। तो इट इज कंपोज ऑफ few scattered tree that tower over the canopy, कैनोपी के ऊपर जो है टावर की तरह है ना, वही लेयर क्या हो गया, इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट मतलब जो बाहर आया हुआ है ना, फॉरेस्ट से बिल्कुल अलग ऊपर बाहर तक आया हुआ, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, मैम हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। हाँ, और ट्री डेंसिटी इज मोर, and that's why there मैम is एनिमल का स्पीसीज भी वहाँ बहुत ज्यादा receiving है। the maximum sunlight, है ना, and that's why the many trees Amazon is the are largest tall in, rainforest. हाँ From the Amazon is the largest rainforest. हाँ, so they are tall in nature. Trees are tall in nature due to high temperature and high rain forest. Now read about, do you know the Constitution of India has given the recognition to the forest and wildlife, and the tribal communities depend upon the forest in the form of some fundamental duty. One such duty is protect and improve the natural environment, including the forest, like the river, wildlife, and to have the passion for living creature. अब listen, ये मैम to ट्राइबल have कम्युनिटी compassion, उसका एकदम ट्राइबल जो जंगल में रहते हैं, people who are living in the forest, उसको ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं। और ये जो है इंडिया गवर्नमेंट जो है ना, और इंडिया गवर्नमेंट ये